करने जा रही हूँ। अगर ये दिन ना होता तो हमारी स्थिति कुछ और होती। अगर ये दिन ना होता तो आज हमारी हालत कुछ और होती। मैं बात कर रही हूँ गणतंत्र दिवस के बारे में, जो कि हर साल 26 जनवरी को हमारे यहाँ मनाया जाता है। हर भारत का नागरिक वोट कर सकता है। उसी संविधान 26 जनवरी को संविधान के सारे आर्टिकल्स लागू हुए। उसी दिन से हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और हर भारत का नागरिक वोट कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना रंग के आधार पे, ना किसी चीज के आधार पे। हमारे संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर BL राव जी, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं की वजह से हमें मौलिक अधिकार मिले, जो कि है हमारे फंडामेंटल राइट्स। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. Right to equality starts from article 14 to 18, which says that there is no discrimination between the race, caste, gender, place birth, place residence and anything. It says that समानता का अधिकार, हमें यह अधिकार मिला कि हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। Then it came right to freedom, which starts from article 19 to 22, which says that we have right to freedom of speech and expression. हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन we have some restrictions also. It says decency and morality, national security, the public order and anything. We should take assembly in a peaceful manner. And then it came right against exploitation, which starts from article 23 to 24, and this says that हम लोगों को भी कोई भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। That's why we can go to directly Supreme Court or High Court if anyone is forcing or doing bad or blackmailing to us. Then it came right to freedom of religion. It starts from article 25 to 28, and it says that there is we can practice any religion without any discrimination. If anyone is forcing us, we can directly move to Supreme Court or High Court at the behalf of the article 25 to 28. Then it came cultural and educational right, which is for our children, and it is very important because it helps us the children to study, not to work in the factory, and it also helps us to go to school and it's a duty of every parent to at the age of 14 years or at the above of age 14 years, they have to go to school. No one can stop them. Then it came the heart and soul of the Constitution. The Dr. B.R. Ambedkar was the her favorite fundamental right was this only, because if our 5 rights are denied, we can directly move to Supreme Court at the behalf of Article 32 to 35. Thank you. मधुर मधुर